Okay. So now we are going to discuss the parallel operation of DC generator. Okay. So for parallel operation of DC generator, first we will see what are the conditions to operate the generators in parallel. So first is the polarities of the generator must be identical. This is the one condition. Second condition, the terminal voltage of the generator which are connected in parallel must be identical. Okay. So first कौन कि आमर जो जनरेटर गुड़ा को parallelly connect करवा तांकर polarity same हेइथवा कथा. Second से जो जनरेटर गुड़ा को parallelly connect करवा तांकर terminal voltage भी same थिबा कथा. Okay. So what are the conditions? So the polarities of the generator must be same. The terminal voltage of the generator must be same. So तामने कौन polarity of the generator must be same. Let us assume a generator and assume generator with a battery and armature resistance. This is one generator EG1. I am representing one generator with a battery along with a armature resistance. Okay, this is one generator and another generator. This is one battery with resistance. So here I am representing a generator with a battery and a armature resistance. This is generator, this is one generator, this is another generators. Okay, this is a positive. Okay. So first the polarities of the generator must be identical. That means the polarity of the positive polarity of first generator, this is the positive polarity of second generator, this is the negative polarity of first generator, the negative polarity of second generator. This is the armature resistance of first generator, this is the armature resistance of second generator. Okay. So this point says polarity of the generator must be identical. That means the positive terminal of both the generator should connect together and the negative terminal of both the generators should connect together. This is the condition. This is the condition that the polarity of the generator must be identical. Okay. Second, the terminal voltage of the terminal voltage. This is the terminal voltage V. So terminal voltage of both the generator must be same for parallel operation of generators. Okay. So the terminal voltage this V must be same for both the generators. So first condition, what are the conditions for parallel operation of DC generators? So first is the condition is what are the conditions? First, the polarity of the generator must be identical and second is the terminal voltage of the generators connected in parallel must be identical. Okay, these are the conditions for parallel operation of generators. So before coming to the parallel operation of the generator, we must aware about the need of parallel operation of generator or what are the advantages of parallel operation of the generators. So parallel operation of the generator ଆମେ କାହିଁକି କରୁଛୁ, କ'ଣ ଆମର advantages ରହୁଛି ଯେ ଆମେ parallel operation କରୁଛେ. Okay. So first advantages of parallel operation of generator, what is the continuity of service. So ଆମେ ଜାଣିଛୁ continuity is the important requirement for electrical system. So what will in parallel operation of generator we will get continuity of service. Okay, means if a single large generator is used in power plant, in that case if it is in case of its breakdown the whole plant will be shut down. Okay, तामने कौन जदि मोर गोटे पावर सिस्टम और पावर प्लांट रे गोटे सिंगल यूनिट ऑफ लार्ज कैपेसिटी रो जनरेटर यूज करूची. ओके, और इन केस ड्यू टू सम रीजन जदि मोर से यूनिटा माने कौन है शट डाउन और ब्रेक डाउन हो गला देन टोटल
प्लांट ही मोर सटडाउन हो ओके सो से है कि जब मुझे सिंगल जनरेटर ऑफ लार्ज यूनिट यूज करुच्ची ताले जदि किसी कारण जदि मोर से ब्रेकडाउन हो गला देन टोटल पावर प्लांट सटडाउन हो सो यही केस रे हमें कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई पाई परिबेनी कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस पाई परिबेनी सो जदि हमें सिंगल यूनिट यूज न करके जदि हमें नंबर ऑफ यूनिट्स को जदि हमें पैरेलली कनेक्ट करबा ओके सो इफ the power is supplied from a number of small units which are operating in parallel then kon haba then in case of failure of one unit in that case continuity of supply can be maintained by the other units okay jodi moro small units guda ko jodi mo parallelly connect karichi so jodi in case moro gote unit jodi moro kichi karan ro moro jodi shutdown he gala then baki unit moro continuously supply douthibe so moro supply continuity of supply maintain habo okay so that is the one advantages of using parallel operations so what is that so continuity of service that means jodi mu single generator use karbi or single unit of large capacity use karbi in that case मोर कौन है ना कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस टा रहिबनी कहीं जदि मोर से सिंगल यूनिट जदि कौन कारण जदि मोर खराब हो गला शटडाउन हो गला डैमेज हो गला सो मोर सर्विस कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस और कंटिन्यूअस सप्लाई टू द पावर प्लांट रहिबो नाही सेही केस रे जदि मु स्मॉल यूनिट को जदि मु पैरेलली कनेक्ट करिवि स्मॉलर यूनिट्स नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल in that case जदि one unit जदि मोर फेल्युअर हो गला then बाकी units remaining units can supply okay so the continuity of service maintain हैला सर्विस टा मोर continuous supply मु पाई परिबी okay second is your efficiency we know efficiency what is efficiency मु तुमको पढ़ाई last class efficiency is output power divided by input power okay so what is efficiency amar machine jete efficient hobo seti bhalo ama pai okay so kon hela ki amar parallel operation re kon hochi je amar ame janchu generator can run efficiently when it loaded to their rated capacity ama generator ta kete bele efficient काम करे जते बळे ये तारा rated capacity से load हेतिबो हला so generators can run or we can say the generator can run efficiently when loaded to their rated capacity जदि तार हम rated capacity को load करके चलाउ छे देले हमरो generator efficiently काम करबा in case जदि मोर demand किछि decrease हला in case when the load demand on the power plant decreases okay then one or more unit can be shut down so remaining unit can be efficiently लोडेड हो पार जदि मोर किसी डिमांड कमी गला देन मु सब यूनिट को न चले कि सम यूनिट को मु शट डाउन कर दे तो बाकी यूनिट से लोडेड कैपेसिटी रे चलिबो सो आवर जनरेटर कोन हो एफिशिएंटली रन करिवो तो दिस इज द सेकंड एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पैरेलल ऑपरेशन ऑफ जनरेटर्स व्हाट इज दैट इज एफिशिएंसी ओके नेक्स्ट दैट इज अ मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ओके आम जान मेसीन गुड़ा को रूटीन मेंटेनेंस और रेगुलर रिपेयर दरकार थाए ओके सो जनरेटर्स इफ द जनरेटर्स आर ऑपरेटेड इन पैरेलल देन रूटीन और emergency maintenance can be performed by isolating the affected generator while load is being supplied by other units okay तामने कोन जदि मो जनरेटर्स पैरेलली कनेक्ट हे जंती जदि मोर को भी कारण जदि मोर गोटे मशीन गोटे यूनिट को रिपेयर दरकार पड़ला किछि डैमेज हिची तो सेही यूनिट को मो आइसोलेट करी आनिबी अदर यूनिट रो अदर हेल्दी यूनिट रो आ ताको मो रिपेयर करि परबी आ सेही केस रे मोर बाकी हेल्दी यूनिट्स से कंटीन्यूअसली सप्लाई दाउथबो ओके सो दिस इज द थर्ड एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पैरेलल ऑपरेशन ऑफ generators so what will happen here so if the generators are operated in parallel then routine or emergency maintenance can be performed by isolating that affected generators and the other generators other healthy generators will supply the power okay this is the third advantages so next is the increasing plant capacity
नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग प्लांट कैपेसिटी. सो आम जानी आमर डे टू डे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी जाऊँगी. सो पॉपुलेशन इंक्रीज होती मैंने आमर से अनुसार इलेक्ट्रिक कंजप्शन भी बढ़ुची. सो आमर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी बढ़ी बढ़ी चलती. ओके. सो से माने ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन इलेक्ट्रिसिटी डिमांड आल्सो इंक्रीजिंग रैपिडली, राइट. सो इन दैट केस हमको एडिशनल पावर दरकार पड़ुची. सो जदि मु पैरेलली कनेक्ट कर जनरेटर्स गुड़ा को लेट्स से मते एक्स्ट्रा अधिक पावर यूनिट दरकार पड़ुची. सो मु से केस रे जो नुआ जो जति कैपेसिटी ऐड करबी ताको मु पैरेलली जो ओल्ड एग्जिस्ट जो थिबो जनरेटर्स पैरेलली कनेक्ट हितबे ता सहित मु एक्स्ट्रा कैपेसिटी रे गुटे मु ऐड करि परिबी. ओके. सो जदि मते रिक्वायर पड़े कि एक्स्ट्रा कैपेसिटी मते दरकार पड़ुची ड्यू टू द डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जदि हमरो इलेक्ट्रिसिटी बढ़ुची बोली हमको अधिक कैपेसिटी दरकार माने सॉरी ड्यू टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हमरो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ी बढ़ी चलची. सो से डिमांड को मु फुलफिल करे पई मते पुणी एक्स्ट्रा ऐड करिया पड़िबो यूनिट. सो एक्स्ट्रा ऐड केमती करा जदि मोर से पैरेलली करना छै से जनरेटर पड़ो ताको मु गोटे न्यू यूनिट नहीं कि से ओल्ड यूनिट रे ताको पैरेलली कनेक्ट करि देई परिबी. हला. सो व्हेन एडेड कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड then the new unit can be parallel with the old units. हला. सो आमर कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जिवो. दे जदि मते ताठो भी अधिक यूनिट अधिक कैपेसिटी दरकार पड़ला. सो जो एग्जिस्ट जो यूनिट रही छी ताको मु आ गोटे न्यू यूनिट नहीं कि सेठी मु पैरेलल कनेक्ट कर देली. सो मोर कैपेसिटी भी इंक्रीज हला अकॉर्डिंग टू द डिमांड. हला. जो डिमांड जति डिमांड बढ़छे ता माने मो से अनुसार मोर जनरेटिंग कैपेसिटी भी मु इंक्रीज करूची. हला. So next is the non-availability of single large unit. So next non-availability of single large unit. That means sometimes कौन है कि हमको single unit of large capacity है ला सब टाइम रे हमको मिले नहीं है ला. So सही केस रे हम कौन करी परिया कि small units number of small units को यदि हमें parallel connect करबा to require that large capacity को है ला. So कौन है ला कि maximum time or in some case will not found the single unit of large capacity. So in that case the number of smaller units can be operated in parallel to meet the load requirement. And also that large unit is also cost hela tar bhi cost very that large unit is also expensive hela. तो सेति पे हमें single unit को जदि हमें पैरेलली कनेक्ट करि परिबा to meet that load requirement, then this is also benefit for us. Okay. So these are the advantages of parallel operation of transformer. Okay. So first one is continuity of service. First one is the continuity of service. Second is efficiency. Third is the maintenance and repair. Fourth is the increasing capacity. And last is the non-availability of single large unit. These are the advantages of using parallel operation of transformers. What are the conditions? Conditions is first is the polarity of the generators must be identical. Second, terminal voltage of the generators to be connected in parallel must be same. These are the conditions of the conditions for parallel operation of transformers.